first we see the rate equation for finding the, in the indicated rate equation, first we study the rate equation for the zero order reaction. Okay, now the zero order reaction means, now order of reaction which we have discussed in the last class. Now order of reaction means how many reactant actually undergoes a chemical change during the reaction, okay, during the course of a reaction. So from the different order reactions, which we can easily find out the number of reactant undergoing a change for the formation of a product. Okay. So here first we take the zero order reaction. Now zero order reaction means the reaction in which the rate of reaction is independent of the concentration of the reactant. It means here the concentration of the reactant does not affect the speed of the reaction. The speed of the reaction is unaffected by the concentration of the reaction. आप चाहे reactant की concentration को increase करें या decrease करें, but it does not affect the order of reaction. Okay, so let's take the integrated form and let's see the derivation for the zero order reaction. Now in a zero order reaction, we have a reactant A which is converted into the product P. Okay, now this reactant initially when the rate of reaction is not started, at that time the time is 0 minute, means जब reaction start नहीं हो रही है उस वक्त जो हमारा initial concentration है reactant का, that is small a, and the initial concentration of the product is 0. Why it is 0? Because the reactant is not converted into the product. Okay, now after some time when the reaction starts, the X amount of the product is formed and the remaining amount of the reactant is A minus X at T equal to T. ठीक है, तो ये जो हमारा T है, it can be 5 minutes, it can be 10 minutes, it can be 20 minutes or 15 minutes जब आप इसको measure करते हो. Okay, now how the rate is written? Now the rate for the zero order reaction is written as, अगर हम लोग reactant के terms में लिखते हैं तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन आई वाज गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, दैट in terms of reactant the minus sign is indicated. Okay, and this minus sign indicates that there is decrease in the concentration of reactant gradually as the time increases. Okay, तो अगर आप reactant के concentration terms में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? Small change in the concentration of the reactant upon delta T means small change in the concentration of the reactant with respect to time. Okay, equal to K A minus X power 0. ओके, अब यहाँ पर हमारा a माइनस एक्स पावर 0, इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब किसी भी टर्म्स में पावर हमारा 0 हो जाता है तो हमारा क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1. ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आप लिखेंगे. नाउ हाउ वी स्टार्ट राइटिंग, यहाँ पर आप लोग देखिए इन द सेकेंड लाइन, दैट इज इक्वेशन 1, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी is directly proportional to A minus X. It means small change in the concentration of the product with respect to time is directly proportional to A minus X. अब जब हम लोग proportionality sign remove करते हैं, it is replaced by small k. Okay, so delta X upon delta T is equal to small k A minus X power 0. अब ये जो हमारा small k है, this is the rate constant. So power 0 means it is equal to 1. तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड इन द इक्वेशन थर्ड वी गेट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट. बिफोर इंटीग्रेटिंग फर्स्ट वी हैव टू रीअरेंज. ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू के डेल्टा टी. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एंड ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन वी गेट एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई. Now here I is the integration constant. ये आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा when you have studied the integration. ठीक है, so here we get the integration constant and the value of I is obtained by taking x equal to 0 at t equal to 0. जैसे स्टार्टिंग में भी आप लोग देखिए when equation is written, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कब होगी, when time is 0. Time 0 means the reaction is not started and we have only the concentration of the reactant. ओके, तो प्रोडक्ट की वैल्यू अमाउंट कब आएगा, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स एंड सम टाइम पासेस. ओके, सो हेयर हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. 0 कैसे होगी, एक्स की जगह पे भी आप 0 पुट करेंगे अबव इक्वेशन में और के की और टी की जगह पर भी
0 पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा फाइनली वी गेट द I इक्वल टू 0. सो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ I in the above equation, that is x equal to kt plus I, and finally we get x equal to kt. And when we rearrange this value, then we get k equal to x upon t. So k is the rate constant. So rate constant equal to x upon t. And what is the unit of this rate constant? That is x की unit हमारी क्या होती है? Concentration, means mole per liter. Okay. So it is mole per liter per time. Time inverse. Mole, liter inverse, time inverse. Okay. So this is the unit for the zero order reaction. Now after writing this, next we draw a plot, and in the plot is drawn between the plotted between a minus x, graph is plotted between a minus x versus time, and here we get the declined slope and the value of the declined line, and this value of the slope is equal to k. Okay, so this is the graph which is plotted in the zero order reaction. And next we have to calculate the half-life period. Half-life period means the time at which the half of the reaction is completed. Now, what is the how the half-life period is related with the initial concentration of the reactant? ये हमें find out करना है. So here we have a equation that is k equal to x upon t. अब हमें क्या करना है? t के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखनी है. So हमारा क्या हो जाएगा? t equal to x upon k. Now we have to find out the t half. T half means half life period when half of the reaction is completed. So t half equal to, अब x की जगह पे देखिए जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी हाफ होगी, और उसको आप x की वैल्यू को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? x इक्वल टू a अपॉन 2 means when the half of the initial concentration of the reactant is consumed, that will give the value of x at t half. Is that clear? So in place of x, you can write t half equal to a upon 2 into k, or t half equal to k a upon 2k. Okay. Up from this equation, t half is equal to a means t half is directly proportional to a. जैसे अगर हम लोग t half की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा, एंड व्हेन वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टी हाफ, देन व्हेन वी डिक्रीज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, the t half also decreases, and when we increase the initial concentration of the reactant, the t half also increases. It means half life period of a reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant. Okay, so this is the relation between the t half and the initial concentration of the reactant. Now let's see the example in that same page. The example is also given for the zero order reaction. Now zero order reaction means the rate of reaction is independent of the concentration of the reactant. ये condition कब आती है? When the reaction takes place in presence of some catalyst or in a photolytic reaction. ठीक है, जब reactions जो है in presence of photons, in presence of light proceed करती है, उस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रिएक्शन पे. मींस जब लाइट प्रेजेंट होगी तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड करेगी ही नहीं, चाहे आप रिएक्टेंट के अमाउंट को कितना भी इंक्रीज कर लें. ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द HCl, एंड दिस HCl इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. इसका मतलब है कि व्हेन द hydrogen molecule and the chlorine molecule is kept, or they come when the hydrogen and the chlorine molecules, they react with each other in presence of radiation, in presence of light. Okay, then only the HCl is formed. Otherwise there is no reaction between the hydrogen molecule and the chlorine molecule. This is first example. Now decomposition of the ammonia. Ammonia is decomposed in presence of molybdenum. Molybdenum is a catalyst. So the decomposition of the ammonia does not take place until the molybdenum is added. The catalyst is added to the reaction.
So in presence of molybdenum only, in presence of catalyst only, the decomposition of the ammonia takes place and it get decomposed into nitrogen molecule and the hydrogen molecule. Okay. So next there is a decomposition of the phosphine in presence of molybdenum on tungsten. So जितने भी हमारे catalytic reactions होते हैं, the reaction which proceed in presence of catalyst and the photolytic reactions, all these reactions comes under the category of the zero order reactions because the order of the reaction proceeds in presence of light. Okay, इतना clear है? So next we have, after the order of reaction, after the zero order reaction, let's see the first order reaction. How the first order reaction of now first order reaction means the reaction in which the rate of reaction depends only on the concentration of one of the reactant. ठीक है, चाहे आप कितने भी reactant molecule ले लें, लेकिन केवल एक reactant molecule के amount में ही changes आएंगे for the formation of the product. So in the first order reaction, let's see the derivation for the integrated rate equation of the first order reaction. We have a product reactant A and this reactant A is converted into the product P. And at t equal to 0, at 0 time interval, the initial concentration of A is A and the initial concentration of the product is 0. Now after some time, when t equal to t, the initial concentration of the A is A minus X and X amount of the product is. ठीक है, तो जब हमारा जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन से सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज ए माइनस एक्स. नाउ we can write the integrated rate law for this equation. So here with respect to product के respect में ही हम लोग rate equation लिखेंगे. तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स पावर 1. अब ये जो हमारा पावर 1 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, यहाँ पर हमारा जाएगा ए माइनस एक्स और इसको हम लोग एक्स को प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर देंगे एक के से. ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स पावर 1. दिस इज इक्वेशन 1. Okay. Now on rearranging the equation 1, we get delta x upon a minus x equal to kt. This is equation 2. अब हमें इस second equation को integrate करना है. So for integrating the equation 2, we can write integrated sign delta x upon a minus x. यहाँ पर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, x equal to 0 से x equal to x. And k delta t, limit of the time t equal to 0 से t equal to t. And finally on integrating the equation second, we get minus, one time integrate करेंगे first time, तो हमारा क्या हो जाएगा minus ln a minus x equal to kt plus z. Now again here z is the integration constant and the value of z is obtained as we have obtained in the zero order reaction. That is how we can calculate the value of this z. That z value is calculated or determined by taking x equal to 0 at t equal to 0. And finally, when the value of x and t is kept in equation third, then we get z equal to minus ln a. क्योंकि यहाँ पर हमारे t की जगह पे 0 हो जाएगा और x की प्लेस पे भी 0 हो जाएगा. तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, k into t equal to 0 and a minus 0 equal to a. So then we get the value of z, z equal to minus ln a. Okay. So this is the equation 4th. I think some students are
राइटिंग अनवांटेड कमेंट्स, ठीक है। जिनको क्लास बेटा प्रॉपर्टी अटेंड करनी है आप लोग करिए, अदरवाइज डोंट सेंड एनी मैसेजेस इन दिस ग्रुप। इज दैट क्लियर? So in the integrated rate equation, here we get the value of z, that is z equals to minus ln a. Now, when we put the value of z in equation third, that is on substituting the value of z in equation third, we get minus ln a minus x equal to kt minus ln a. This is equation 4. And on rearranging the equation 4, we get kt equal to minus ln a minus x plus ln a. Now finally, or we can also write that kt equal to ln a upon a minus x. And finally, we get the value of k, that is k equal to 1 upon t ln a upon a minus x. Okay. Or when this ln is converted into natural log, then we get 1 upon t 2.303 log of a upon a minus x. Okay. So this is the integrated rate equation for the first order reaction. Now here, for finding out the value unit for the first order reaction, here the a is also the concentration terms जो होंगे for a and a minus x, that will get cancelled out. Mole per liter, both will get cancelled out. And here only t is remaining. तो हमारे पास जो first order reaction की जो unit होती है, that is time inverse. It can be second inverse, it can be minute inverse, it can be hours inverse, whatever time you can take, है ना, you have taken, that is हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट हो जाएगी दैट इज टाइम इनवर्स. तो जो भी आप यूज करते हैं यूनिट, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, आप उस टर्म्स में लिखेंगे. ओके, इज दैट क्लियर? Am I audible? Yes, ma'am. Next we have, let's plot the graph. And here the graph is plotted between log of a minus x with respect to time. Okay. And here we get a decline line. And there is a slope equal to minus k upon 2.303. And ये जो हमारा intercept है, this intercept is equal to log a. So there is an advantage of the graph. जब आप graph plot करते हैं, and in the graph, if we does not know the initial concentration of the reactant, it can be easily find out with the help of the graph. Okay, so graphical method is very useful for finding out the value of k, value of the rate constant, as well as if we does not know the initial concentration of the reactant, then it can also be calculated with the help of graph. Okay, is that clear? Now next, to find out the T half for the reaction. Now here T half means the time required to complete any particular reaction at half interval, half of the change. Okay, it means when half of the reactant is converted into the product in a simple language. That is the T half of a reaction. So for calculating the T half of a reaction, let's take x equal to, जैसे हमारा half reaction complete हुआ, half reaction complete होने का मतलब क्या हो गया कि half of the reactant जो है उसका half portion जो है it is converted into the product. तो x की जगह पे आप a/2 भी लिख सकते हो, है ना. प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट को हम लोगों ने किससे इंडिकेट किया है, x से. सो इन प्लेस ऑफ x यू कैन आल्सो राइट a/2 when half of the reaction is completed at, और ये a/2 कब लिखेंगे, when at t equal to t half. Okay, now here for finding out the t half of a reaction, again we use the integrated rate equation which we have find out or calculated in the previous
पीडीएफ में जो दिया हुआ है, प्रीवियस पेज ऑफ द पीडीएफ। तो यहाँ पर हम लोग टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक्स की जगह पे यू कैन राइट ए अपॉन 2। ओके, सो व्हेन वी राइट ए अपॉन 2 इन प्लेस ऑफ एक्स and when we calculate or simplify the above equation, तो हमें क्या मिलेगा, t half equal to 2.303 upon k log of a upon a by 2. Okay, now when we further calculate it, then we get t half equal to 2.303 log of 2, and when the log value of 2 is multiplied with 2.303, then we get 0.693 upon k. So the t half equal to 0.693 upon k. It means t half is independent of the initial concentration of a reactant for a first order reaction. ठीक है, it means आप first order reaction के लिए reactant की concentration को चाहे increase करें या decrease करें, but जो हमारी particular reaction के लिए t half की जो value है, जो time period है, वही रहेगा. There is no change in the t half of a reaction. Is that clear? So this is the t half of a reaction for finding out the t half for the first order reaction. Now after that, let's see the example for the first order reaction. The first example is the hydrolysis of the ester. Now in the hydrolysis of the ester, the ethyl acetate or methyl acetate is hydrolyzed in aqueous solution in presence of mineral acid, in presence of HCl. Okay. Here we have an acidic condition in which the methyl acetate is hydrolyzed in presence of HCl, in presence of acid. Means the hydrolysis of the methyl acetate takes place in presence of acid. Okay. So this acid is working as a catalyst. So hydrolysis mein the methyl acetate reacts with water and there is a formation of the acid and alcohol. So there is a formation of acetic acid and ethanol. So this reaction is a first order reaction because water is taken in large amount and a small amount of methyl acetate is taken. Okay, and जो भी changes होते हैं reaction के, that changes are just because of the presence of the methyl acetate. It means methyl acetate की concentration में ही changes होंगे, water के concentration में changes नहीं होंगे, because this water is taken in excess. Large amount of water is present and among that water molecule, one molecule of water reacts with one molecule of the methyl acetate for the formation of acetic acid and the ethanol. Okay, so some amount is only removed and here though basically जो भी changes हो रहे हैं, that changes are at the methyl acetate, not in the concentration of the water. Okay? So this reaction follows the first order. Now next example is the inversion of cane sugar. Now in the inversion of cane sugar, yes? मैम मेमोरेशन सूडो हेलो, फर्स्ट ऑर्डर हाँ रिएक्शन था बताइए क्या चीज? सूडो है ना वो हाँ, actually it is a pseudo first order reaction. Now pseudo first order reaction, as we have discussed in the last class also, pseudo order reaction means here the molecularity and the order of the reaction is different. When we see in terms of molecularity, means two molecules are participating in the reaction. Okay, one molecule of methyl acetate and one molecule of the water. But actually जो भी concentration में changes आ रहे हैं, that is in the concentration of the methyl acetate. Okay, so that reaction actually follows the pseudo first order reaction. Now next is the inversion of cane sugar. Now in the inversion of cane sugar also, this reaction is acid catalyzed reaction. That is the reaction taking place in presence of acid. Here the cane sugar or the sucrose reacts with the water and it is converted into glucose and the fructose. Now next example is the decomposition of nitrogen pentoxide in presence of carbon tetrachloride. Here the nitrogen pentoxide is decomposed into nitrogen dioxide and half molecule of the oxygen. So both nitrogen pentoxide and nitrogen dioxide is soluble in CCl4, carbon tetrachloride, which remains in the solution, and water oxygen is insoluble and it escapes into the open environment. Okay.
So all these are the examples of the first order reaction which is given in the PDF. Is that clear? Yes, ma'am. Next, we take the second order reaction derivation. And second order reaction means when the rate of reaction is proportional to the square of the concentration of the reactant or to the product of the concentration of the reactant. Means when the rate of the reaction is affected by the concentration of the two reactants in a reaction. That is the second order reaction. So in the second order reaction, if two molecules of A is converted into the product, so यहाँ पर हम लोग इसके terms में क्या लिखेंगे? Second order reaction में when the rate is written for the second order reaction, then it can be written like this: delta x upon delta t equal to k a minus x power 2. Okay, so this power is indicating how many molecules of the reactant is actually converted into the product. How many means how many number of reactant molecule is undergoing changes for the formation of a product. Okay, this is one condition. And another condition means A plus B. Two different reactants are there and they are converted into the product. So here for the two different reactants, we can write delta x upon delta t equal to k concentration of A, concentration of B. Okay. So here for the second order reaction, we have two conditions which follows the second order of the reactions. And in these conditions, that is, two types of second order reactions are there. First, where the concentration of the reactant are same and where the concentration of the reactant are different. Okay, different reactant concentration are taken and same reactant concentration are taken. So first we see the case when the both of the reactant are same and the initial concentration of the reactant are same. So the derivation for this, that is, if we have the reactant A and B and it is converted into the product, and here the reactant concentration is same amount of reactant are taken which is converted into the product. ठीक है, तो A और B का जो हमारा initial concentration होगा that is A होगा at t equal to 0 and product का amount जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा. Now at t equal to t means after passing some time, when some time passes, then some amount of the reactant is converted into the product. So X amount of the product is formed और हमारे पास initial concentration of the reactant क्या होंगे? A minus X, दोनों में A minus X, because initially the same amount of the reactant is taken. Now for writing the rate law equation, that is, rate law equation is written in terms of the product delta x upon delta t equal to k a minus x or a minus x power 2. ठीक है? And after writing this, we get a simple equation delta x upon delta t equal to k a minus x power 2. Now, when we rearrange the above equation, we get delta x upon a minus x power 2 equal to k delta t. This is the rearranged form of the above equation. And on integrating equation 2, when we integrate the equation 2, then we get integrated sign, limit x equal to 0 to x equal to x, and delta x upon a minus x power 2 equal to k delta t. Okay. And finally, on integrating the above equation, here we are integrating 2 times and we get 1 upon a minus x equal to kt plus z. Again, here z is the integration constant, and as we all know how the value of z is calculated. कैसे z की value calculate करते हैं बेटा? बताइए, anyone? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. z की value कैसे ऑब्टेन करेंगे आप लोग?
How will you obtain the value of Z? Simply the value of Z is obtained by taking x equal to 0 at t equal to 0. Initially when the reaction is not started, तो वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 0 टाइम इंटरवल, 0 मिनट और 0 सेकेंड. ओके, सो उस वक्त जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी? 0. मैम 0. Yes. So here the value of z is obtained by taking x equal to 0 at t equal to 0. तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 लेंगे और t की वैल्यू 0 लेंगे और उसको above इंटीग्रेटेड, जो हमें इंटीग्रेशन के बाद इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है, उसमें जब हम लोग x और t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/a माइनस x की जगह पे 0 पुट कर दिया आपने, इक्वल टू k, t की जगह पे 0 पुट कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a. z की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1/a. और इसी z की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन पे पुट कर देंगे. ठीक है. एंड फाइनली व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज kt इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, और यू कैन ऑल्सो राइट k इक्वल टू 1/t in square bracket 1/a minus x minus 1/a. And simply when you solve this equation, then you get k equal to 1/t x upon a minus x. Okay, this is the integrated rate equation for the second order reaction, and the unit for the second order reaction is liter mole inverse time inverse. because हमारे पास क्या है? concentration terms 3 है, x की concentration भी हमें फाइंड आउट करनी है ना, a के लिए भी concentration term है और a minus x के लिए भी है. so in this case x की हमारी concentration term क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर upon mole per liter into mole per liter. So mole per liter will be cancelled and remaining में हमारा क्या हो जाएगा? 1 mole per liter. So जब आप यूनिट लिखते हैं इसकी तो हमारी क्या हो जाएगी? टाइम लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स. ओके, इतना क्लियर है? Now after this we plot a graph for the second order reaction, and in the graph is plotted between 1/a minus x versus t. Now जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, एंड हियर c इज द इंटरसेप्ट, m इज द स्लोप, एंड y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाती है? reactant की concentration. So here the graph is plotted between 1/a minus x, that is on the y-axis, 1/a minus x is taken, and on the x-axis time is taken. Okay, and हमारे पास जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 1/a minus x from the above equation equal to kt plus 1/a. अब यहाँ पर k is the slope, t is taken on the x-axis, and इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो हमारा क्या जाएगा? 1/a. सो जो हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रेट लाइन या ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इन दिस केस द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/a minus x versus time, and here we get a straight line in straight line, and where the slope is equal to k. Okay, and this intercept gives the value of 1/a. So again I am telling you that, again I am repeating that from a graph you can easily find out the value of initial concentration of the reactant. अगर हमें initial concentration नहीं पता है reactant की, so it can be easily find out with the help of a graph. It can be easily find out from a graph. Okay, is that clear? So this is the expression for the second order reaction where the both reactant concentration is same. Unit also we have discussed. Next we will take the half-life period, how we calculate the half-life period. Again, for calculating the t half, the in place of x, a/2 is written. Okay, so for the t half, that is k equal to a/2, हमारा क्या था? 1/t x
a इंटू ए माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर x की जगह पे भी a/2 लिखोगे और a माइनस एक्स में जो x है उसकी जगह पे भी हम लोग a/2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड टी हाफ इज इक्वल टू 1/ka। नाउ हियर 1/ka का मतलब क्या हो गया, k इज एट डिनोमिनेटर पार्ट and it means that T half is inversely proportional to initial concentration of the reactant. Means that हम लोग reactant की concentration को increase करेंगे तो T half की value decrease करेगी. And when we decrease the initial concentration of the reactant, the value of the T half increases. Okay. So there is a relation between the T half and the initial concentration of the reactant, and in each order. जीरो ऑर्डर में भी था, फर्स्ट ऑर्डर में भी था एंड सेकेंड ऑर्डर में भी था। जीरो ऑर्डर में क्या था, टी हाफ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मींस आप इनिशियल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, टी हाफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इन द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मींस आप टी हाफ की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो टी हाफ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एंड व्हेन वी डिक्रीज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द वैल्यू ऑफ टी हाफ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये हमारा इनवर्स रिलेशन है। इज दैट क्लियर? मैम लेकिन के तो कांस्टेंट रहता है। क्या चीज? के मैम, के तो कांस्टेंट रहता है, तो के की वैल्यू हमने कहा, हम इसमें रिलेशन हम लोग किसके किसके बीच में देख रहे हैं, टी हाफ के बीच में और रिएक्टेंट की आपने बोला कंसंट्रेशन, कि ओके मैम, ठीक, कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ओके। के की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज के इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। आज क्लास में इतने ये कॉल मैसेजेस के रिटन मैसेजेस क्यों आ रहे हैं अनवांटेड, क्या बात है? श्रुति, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर मैसेज डाला है, क्यों आप लोगों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या? रोल नंबर 61 श्रुति बंसल। देखिए, जो बच्चे यहाँ पर अनवांटेड मैसेज लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में सब बच्चों को क्लास से रिमूव कर दूंगी एंड आई विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू अटेंड द क्लास, ओके। So behave yourself. Hello. Those who are writing the unwanted messages. हेलो। हेलो, बताइए। एक्चुअली मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मतलब रुक रुक के आ रही है, अभी तो आ रही थी। अभी आ रही है, रुक रुक के आ रही है, इसलिए बच्चे बीच में मैसेज अनवांटेड लिख रहे हैं, है ना, क्लास के बीच में। क्यों भाई? हेलो हेलो, अब आ रही है? हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Next we take the condition for the second order reaction, where the initial concentration of the reactant are different. Okay, different concentration of the reactant are different. हेलो हेलो, हाँ मैम अब आ रही है। आ रही है? मैम So कभी कभी let's आ take- रही है, कभी कभी नहीं आ रही। बेटा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से नहीं आती है, ठीक है। So next we take the second case, that is the second order reaction for different concentration of the reactant. And here we have taken the two reactant whose initial concentration is different. So the reaction is A plus B. It's converted into the product, and the concentration of the reactant initially, the different amount of the reactant are taken. Okay. So the at time equal to 0, t equal to 0, the amount of A is A and the concentration of B is B. And the product is equal to 0. It means initially when the reaction is not started, the amount of the product is equal to 0. That is, no product is formed. Okay. Now after some time, X amount of the product is formed and this X is subtracted from A and B both. तो यहाँ पर हमारा एट टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और प्रोडक्ट की जगह पे x। ओके, सॉरी। नाउ फॉर दिस
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन द माइनस स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए with respect to, or small change in the concentration of A with respect to time is equal to small change in the concentration of B with respect to time is equal to K rate constant, concentration of A, concentration of B. सिंपल ए इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस बी माइनस एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. अब ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. सो फर्दर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में इसको कंटिन्यू करेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स. ओके, नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग रीअरेंज करेंगे. रीअरेंजमेंट हम लोगों ने लास्ट इक्वेशंस में भी किया है, तो जब हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी. This is what we get after rearranging the above equation. And after rearranging, we integrate the above equation. तो हमें क्या मिलेगा, delta x upon a minus x b minus x, and integration limit is from x equal to 0 to x equal to x equal to integration sign t equal to 0 to t equal to t. This is the integration limit k delta t. Now, when we solve this equation, then we get minus 1 upon a minus x, integration sign 1 upon a minus x, 1 upon minus 1 upon b minus x, then bracket close, delta x equal to k delta t, or it can also be written like this, 1 upon a minus b square bracket ln a minus x minus ln b minus x, limit from 0 to x equal to kt, or it can also be written like this. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. There are multiple way of writing this. 1 upon b minus x, a minus b, sorry, square bracket ln a minus x upon a minus ln b minus x upon b equal to kt. ठीक है. So for simplification, this here we can write 1 upon a minus b ln b into a minus x upon a into b minus x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे and we get kt. So the value of k is equal to 1 upon t a minus b ln b a minus x upon a b minus x, or when ln is replaced by the natural log तो हमारा हो जाएगा t equal to 2.303 upon t, sorry, k equal to 2.303 upon t log of b into a minus x upon a into b minus x. ठीक है. So this is the rate expression for the second order reaction where the initial concentration of the reactant are different. इतना clear है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Now there are some examples for the second order reaction, and generally the second order reaction is seen in gaseous phase and in the liquid phase. It is not seen in the solid phases. Okay, so in the gaseous phases, the hydrogen molecule reacts with the iodine molecule and the two molecule of Hi, hydrogen iodide, is formed. Okay, and the first is the example for the formation of the hydrogen iodide, and second is an example for the decomposition of the hydrogen iodide. That is, two molecule of hydrogen iodide Hi is decomposed into hydrogen molecule and the iodine molecule, and here the ethylene reacts with the H2 and we get the ethane. Okay, formation of the ethane. Next, the decomposition of the ozone. Ozone, two molecule of ozone is decomposed into three molecule of the oxygen. So this is an example for the second order reaction in the gaseous phase. And next we have an example for the second order reaction in the liquid phase. That is, two molecule of benzaldehyde reacts with, it is converted into this molecule, that is C6H5CH OHCO C6H5. Okay. Next we have the example ammonium cyanide, and it is converted into OCNS2, that is the nitrile. Okay. So all these are the example, and another one is the ethyl acetate
reacts with the NaOH, saponification of the ester. This is an example for the saponification of the ester. First order reaction tha, that was the hydrolysis of the ester. And in the second order reaction, there is a saponification of the ester. Means it reacts with the alkali. Reaction between the ester and the alkali. Methyl acetate reacts with the alkali, that is NaOH, and there is a formation of sodium acetate and the alcohol. Okay. So all these are the examples for the second order reaction, where the two molecules are converted into the product. Is that clear to you all? Now for the nth order reaction, the rate equation is K equal to 1 upon T n minus 1, 1 upon A minus X n minus 1 minus 1 upon A n minus 1. Okay, this is the rate equation for the nth order reaction. And for the half-life period, T half equal to 1 upon K n minus 1. मैम आपकी आवाज कट रही है. Hello? Hello? यस मैम. अब आ रही है? अभी आ रही, मैम बीच में चली गई थी. बेटा नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है. ओके मैम. Okay. So this is how we find out the integrated rate equation for different order reactions. Okay? So in case you have any doubt, then you can ask me. Okay? So this is all for today.